Well, hello and a very warm welcome to all our viewers. My name is Kanav Bali and you are watching the CricketNext YouTube channel. We are here to discuss India versus New Zealand Day 3. Mixed share kind of a day. India team जो बहुत पीछे रह गई थी. They did well with the bat, but is it enough? That's a big question. As of now, they are still 125 runs behind New Zealand's total of the first innings. It's a huge mountain to climb for the Indian team. आगे क्या होगा? अब तक क्या हुआ है? To talk more about this, I have with me Taus Rizvi and Bansal Shah, and we'll talk about this match about day one. Day one, to khair kuch hua hi nahi. Day two, day three, and what's going to happen on day four and day five. Taus, thank you so much for connecting with us. How would you rate day three in terms of Indian team's perspective? क्या थोड़ा better हुआ है, and do you think what they did today can help them going forward? कनव चॉइस ऑफ वर्ड्स हो गया, थोड़ा बेटर नहीं, बहुत बेटर हुआ है। 46 ऑल आउट से यहाँ पर आप 231 for 3 is something, I mean, astonishing the way these two guys played, especially Sarfaraz in fighting conditions. मैं सरफराज का इनिशियली मेंशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक फाइटिंग नॉक था, राइट? ये और विराट कोहली का फॉर्म. And then, I mean, Rohit Sharma could have capitalized, Yashasvi could have capitalized. We would have overtaken the lead if these two guys would have continued their good form. Rohit Sharma or maybe Yashasvi Jaiswal. But ठीक है यार, the way we bounce back after 46 for ये and then still trailing, it's still a long way to go, 125. क्योंकि आपने देखा कि यार क्या इमीडिएट कोलैप्स हो सकता है न्यूजीलैंड को देखकर फर्स्ट सेशन जिस तरह से चला गया, वैसा हो सकता है नेक्स्ट सेशन, फोर्थ सेशन हमारा क्रूशियल रहेगा कल का दिन. तो अगर हमारा मेजर कोलैप्स हो गया और 125 के अंदर, तो हम तो हार ही जाएंगे. एक इनिंग्स न्यूजीलैंड को एक ही इनिंग खेलना पड़ेगा, मतलब एक ही इनिंग खेले होंगे समझिए. सो आई थिंक गुड कमबैक ओवरऑल, बट वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो. We have to give first, overtake the lead, then you have to give them a certain kind of target to achieve. It's still a long way to go because you don't have a KL Rahul in form, somebody who got nicked the other way in a weird manner in the first innings. Rishabh Pant is still, you don't know about his fitness in knee में क्या हो रहा है, क्या अभी तक improvement आया है, क्या fit रहेंगे, batting करने लायक रहेंगे. Then you have a Jadeja and a Ashwin. अब कहाँ तक जाएगा? Also, the wicket you see has started breaking, right? Yeah, Spinners को yeah. थोड़ा help करने लगा है. तो यहाँ पर इजाज पटेल और ग्लेन फिलिप्स क्या रोल प्ले करेंगे, क्या वो ट्रबल करेंगे अश्विन को या जडेजा को? एटलीस्ट हमको यहाँ पर उनको अभी तो 132 से ट्रेल कर रहे हैं, मगर हमको अगर फाइट देना है तो 150 कम से कम होना चाहिए, 150 कम से कम देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास स्पिनर्स है, कुलदीप है, अश्विन है यहाँ पर फिफ्थ डे विकेट पे उनको ट्रबल करने के लिए और मैच जिताने के लिए. और इससे ज्यादा एक्साइटिंग मैच मुझे लगता है कोई नहीं होगा अगर हम 150 की एटलीस्ट लीड ले लें उनके सामने और उनको एक अच्छा स्टिफ टारगेट दे दें. Yeah, absolutely. That looks like a dream score as of now, a dream situation to be in from the Indian team's perspective. But Bansal, I'd like to bring you in here. Your thoughts on day three of the India versus New Zealand test. Are you happy with how the things were today for the Indian team, or do you think if we fell short, कुछ और runs या कुछ कम wickets जरूर होनी चाहिए थी Indian team के लिए? Bansal, you are on mute. Oh, sorry. Overall, I feel that India were very good on day three. काफी अच्छा comeback है, especially after what happened on day two. This is a really good comeback to bet in such a manner. First of all, I was quite skeptical of the approach that Indian batters took at the start of the innings. मतलब जिस तरह खेल रहे थे, मतलब जायसवाल और रोहित शर्मा थोड़ा brisk खेलने की कोशिश कर रहे थे. Then कोहली coming down, stepping down and hitting those sixes. सरफराज भी अपने शॉट्स खेल रहे. He's still in the strike rate of 90s. तो आई वाज क्वाइट स्केप्टिकल. जो हम बिहाइंड द कैमरास भी बात कर रहे थे कि इतना जल्दी खेलने की क्या जरूरत है, इतना लंबा टाइम टेस्ट में बचा है, हम इतने ज्यादा रन से पीछे है. मतलब व्हेन द इनिंग स्टार्टेड वी आर ट्रेलिंग बाय ऑलमोस्ट 350 रन्स. तो I was not very happy with the approach, but overall I think it has worked well for India. It has played well. विराट कोहली का विकेट ऑब्वियसली लास्ट बॉल पे जाना उस तरह से was very disappointing, very sad in fact, क्योंकि लग रहा था कि एक जो सेंचुरी की बात होती रहती है, वो सेंचुरी आ रहा है ऐसा लग रहा था. जिस तरह वो खेल रहे थे काफी मतलब स्टेबल लग रहे थे क्रीज पे. तो दैट इज समथिंग दैट आई एम सैड अबाउट. बट ओवरऑल आई थिंक अ वेरी गुड डे फॉर इंडिया.
the way they have come back, and if they can pull out something special tomorrow, so ताउस भाई बोल रहे हैं, मतलब I think if we can pull out something special tomorrow, it will be similar to that 2001 टेस्ट विन इन कोलकाता. भले इधर ऐसा नहीं है कि दो ही बैटर्स 200 रन बना रहे हैं, बट अगर चार बैटर्स भी 70-80 या 100 रन बना रहे हैं, पांच बैटर्स बना रहे हैं 50s, तो आई थिंक इट विल बी very similar, that after trailing by 350 runs, we are putting on a target of some 150-200 runs on day 5. So hopefully something like that happens tomorrow. But abhi ke liye, I would still say that despite of our good batting today, New Zealand are ahead of India in the game. Absolutely. मेरा एक काउंटर है यहाँ पर, एक सेकंड, मेरा एक काउंटर है कि अगर टीम इंडिया अटैक नहीं करता है यहाँ से, अगर जिस तरह से आप स्केप्टिकल थे कि इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, दे शुड हैव प्लेड, दे शुड हैव बीन मोर डिफेंसिव इन देयर अप्रोच, तो वहां से आपको एक झलक ये मिलती कि यार वो शेल में चले गए, ऑलरेडी 2 विकेट गई है, मेन विकेट गई है, तो अगर वो शेल में चले जाते तो उनके लिए, न्यूजीलैंड के लिए और इजी हो जाता उनके ऊपर कंट्रोल करना, गेन करना, क्योंकि लीड वाज quite enough to put them on the back foot, and that was the right movement, that was the right move to go anti counter attack karne ka, and which is what Virat Kohli and Sarfaraz Khan did. Exactly. Continued the way Rohit Sharma went ahead, and this because I mean the wicket is breaking, आपको चांस नहीं देने का, आपको पांचों के पांचों बॉलर जबरदस्त हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लूप होल है सिराज जैसा कि यार शायद सिराज नहीं कर पाए, थोड़ा डाउट्स है, वहां पर पांचों के पांचों बॉलर टॉप फॉर्म में हैं और जबरदस्त तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, जरा सा रूम नहीं दे रहे हैं. दे आर टेस्टिंग सरफराज खान विद बाउंसर्स, दे आर टेस्टिंग विराट कोहली विद स्पिनर्स, पुटिंग इन द एरियाज वेयर देयर आर पैचेस, तो वो माइंड गेम उन लोग ऑलरेडी खेलना शुरू कर दे, एंड that was the main reason why they counter attacked. और अगर वो नहीं करते the situation would have been worse, और आपको शायद अश्विन और जडेजा को बैटिंग करते हुए देखना पड़ता नाइट वॉचमैन की तरह. Otherwise, I think it was a right move to go ahead. Although it looked थोड़ा aggressive, but that was the only way to go ahead, I believe. But ताउस भाई, मतलब अप्रोच अब सही लग रहा है क्योंकि it turned out well. मतलब 3 ही विकेट खोए हमने, we are trailing only by what 130 runs if I'm not wrong now. बट अगर 100 रन पे 4 विकेट होते, फिर से 150 पे 5 होते, फिर से अगर तो फिर क्या बोलते हैं, मतलब no, but Bansal, कभी ना कभी जो as we were discussing के कभी ना कभी आपने आउट होना है, तो might as well try and reach that target, क्योंकि आप if you are losing you will at least try and lose and not lose by an innings, क्योंकि घर पे इंडिया का by an innings हारना it's a big thing. चलो आप जीत नहीं भी अगर पाएंगे, अगर 150 पे 5 होता तो एक इनिंग्स से आसानी से हारते हैं, मतलब तो वही है नहीं, अगर 150 यहाँ पे ये फर्क है, अगर 150 पे 5 होता, पर अगर 320 पे भी ऑल आउट हो जाते ना, तो भी आप एक इनिंग से हारते, तो might as well try and cover that run, try and cover that distance between the runs, and I personally believe that India did the right approach, they took the right approach today. But ताउस, ये जो आपकी स्क्रीन पर प्लेयर है, how big a wicket this is, could this be a very big factor going ahead in this match? क्या ये एक विकेट मैच को टर्न कर सकता है? What are your thoughts on Virat Kohli's dismissal just at the stroke of stumps? Absolutely. Last night we were having discussion, Bansal was there, and I had suggested that Virat Kohli will play a crucial role. Suggested kya, he should have been, he's the senior most guy, and exactly what he did. सी विराट कोहली जब होते हैं तो एक्सपेक्टेशंस रहता है, वो फियर फैक्टर जिसकी हम कल बात कर रहे थे वो रहता है, एंड वो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं अगर आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर ले. हाँ, वो डिसमिसल थोड़ा टेम लगा लास्ट में, ही कुड हैव बीन अ बिट cautious enough because we were going into the sunset. That was the last over of the day, last ball of the day. He could have been more aware of the situation. वहां पर आप गलत शॉट नहीं खेलते, या शायद अनफॉर्चुनेट थे कि वो गलत शॉट निकल गया या एज लग गया. He was unsure himself, but 70 made a difference, but it could have been bigger score यार. At one time it was looking, Virat was competing with Sarfaraz Khan, जिस तरह से आपस में एक दूसरे को बैटिंग कर रहे थे, शॉट्स एग्जीक्यूट कर रहे थे, तो लग रहा था वो एक दूसरे को ओवर पास करने की कोशिश कर रहे थे, एंड दैट वाज समथिंग दैट वाज लुकिंग हेल्दी कि यार विराट अभी भी वो हंगर है, अभी भी वो लग रहा है कि यार उनको करना है, उनको वो कमबैक करना है, उनको प्रूव करना है खुद को, अपने आप को, दूसरों को, कि भाई अभी भी दम है. 9,000 रन तक पहुंचे हैं और
see, this was a big wicket. This was a big wicket. If he was around, there would have been sense of some कंफर्ट कि यार विराट है, कल विराट आगे लेके जाएंगे, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, इनको ओवर पावर करने की चांस है, डाउट्स नहीं होते हमारे पास कि यार केएल राहुल अब आएंगे, डाउट्स नहीं होते यार ऋषभ पंत नहीं आएंगे, डाउट्स नहीं होते कि यार रविंद्र जडेजा और अश्विन की भी बैटिंग आने वाली है. तो अब वो डाउट स्टार्टेड कमिंग एंड ऑल्दो Sarfaraz is around, but Sarfaraz is still a youngster, and it would be unfair to put all the pressure on him. Although he's playing international cricket, he has to take up the responsibility. He has to put his feet on the pedal and take the team forward, because that is why he's been picked. He scored so many runs. So yeah, Virat Kohli's loss is a big loss here. The situation would have been completely different if he was around tomorrow. यहाँ पर दोनों की पार्टनरशिप आगे बढ़ती और बड़ी हो सकती थी. मैटर ये था कि यार ये पार्टनरशिप बड़ी होके एक अच्छा टारगेट दे सकती थी न्यूजीलैंड को, और हमको एक विन की तरफ, क्योंकि विकेट डिटेरियोरेट हो रही है, आसान नहीं हो रहा है, तो शायद विन की तरफ ले जाती हमारे लिए. मगर अब यहाँ पर मौका है कि आपको एटलीस्ट ओवरकम करना. अब 125 की लीड है, अब उसको आपको 0 से शुरुआत करनी है कल, और क्या सरफराज कर पाएंगे कि नहीं, that will be something interesting to watch out for. Although the whole pressure will be on Sarfaraz right now, because he is the man who's been there for a long time. 70 kiya hai, 70, 75. So he has got the runs. He's more comfortable. He knows the situation now. He knows the condition now. So he has more responsibility than any other batsman who's going to come next. So yeah, KL's wicket is a big loss right now. He could have waited for that ball, or maybe he could have negated it. Exactly. Yeah, absolutely. Virat's wicket was a big thing for New Zealand. They'll be happy aside going back into the dressing room. But Bansal, the other guy on your screen right now, Sarfaraz Khan, अभी तक की जो knock है 70 runs की of 78 balls. How crucial was that? Were you impressed the way he was batting? We were having a chat. You were not happy with the kind of strokes he was playing in between. But how crucial will he be? And from his position, from his point of view, what will he be thinking अब कि एक ठीक है, एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप थी, a very big wicket fell on the other hand, अब other end, अब कल से एक नया बैटर आएगा, 0 से स्टार्ट करेगा, तो सरफराज खान को अब आगे क्या करना? Yeah, first of all, I think it's a brilliant fight back by Sarfaraz. मतलब obviously मैं अप्रोच से ज्यादा खुश नहीं था, कि मुझे थोड़ा ज्यादा रेकलेस लग रहा था, बट कीपिंग दैट असाइड, जितने रन्स बने आज, मतलब he has played very well, and to play such an innings under pressure. एक तो टीम पहली इनिंग्स में 46 पे ऑल आउट हो चुकी है, अभी इतने रन से ट्रेल कर रही है. यू लॉस्ट योर ओपनर्स आफ्टर अ गुड स्टार्ट, बट यू लॉस्ट देम इन नॉट टू मच ऑफ अ टाइम. मतलब थोड़ा जल्दी 2 विकेट्स चले गए, उसके बाद आके इस तरह का इनिंग खेलना, अपना नेचुरल गेम खेलना है. स्पेशली फर्स्ट इनिंग में जिस तरह से वो आउट हुए थे, एकदम मतलब अगली तरह से आउट हुए थे, मतलब क्या शॉट लग रहा था. मतलब उसके बाद भी इधर आके इस तरह खेलना, इतने रन बनाना, और ये स्ट्राइक रेट से रन बनाना, आई थिंक इट्स रियली कमेंडेबल कि ये लेवल पे भी वो ये चीज कर पा रहे हैं. लाइक ऑन अ पिच दैट इज नॉट इजी टू बैट. जो बोलते रहते हैं कि सरफराज इज ओनली गुड ऑन फ्लैट ट्रैक्स, जो इंग्लैंड के सामने भी जो ट्रैक्स थोड़े बैटिंग इजी लग रही थी उधर, बट इधर ये चीज नहीं थी, और उसके बावजूद सरफराज ने जिस तरह रन बनाए, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड टुमारो आई थिंक ताउस भाई राइटली सेड कि अब उन पे थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा. भले देयर आर सम मोर सीनियर प्लेयर्स टू सरफराज that are yet to come to the crease. पंत भी सीनियर है उनसे, केएल राहुल ऑब्वियसली वेरी सीनियर, बट सरफराज क्योंकि इतना खेल चुके अब आज, तो कल जब वो आएंगे उनके ऊपर थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि वो इनिंग्स को आगे लेके जाए इंडिया का. मतलब एटलीस्ट फर्स्ट सेशन में एंकर करे, या फर्स्ट 1.5 सेशंस में एंकर करे इनिंग्स को, खुद का भी सेंचुरी या 150 बनाए, तो दैट विल बी गुड फॉर हिज करियर एज वेल, एंड फॉर इंडिया इन दिस गेम एज वेल. मतलब अगर सरफराज टिकते हैं और 100-150 रन बनाते हैं, तो क्या इमेजिन कि इंडिया का स्कोर काफी अच्छा हो जाएगा, एंड विल रियली बी एबल टू कम्पीट न्यूजीलैंड फॉर अ विन. मतलब फिर ये नहीं होगा कि हम मैच बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ. मतलब विल बी गोइंग फॉर अ विन देन. Yeah, well, hopefully Sarfaraz will be thinking the same, and he'll be eyeing a big innings, because if he scores big, the team gets to do well, and if the team does well, you never know what happens on day 5, at the end of day 5. But Taus, your thoughts on the wicket now? Day 1 washout, day 2 India का जो session था, that we have no idea what happened. The conditions were very favorable to the bowlers, but जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने आई, the conditions
were perfect for batting. Indian team also today they looked really really good with the bat in hand. Ball ठीक है कुछ odd balls नीचे रह रही थी, bounce हो रही थी. There is some turn in the pitch. But going forward, day 4, day 5, how do you see the pitch panning out for the next 2 days? First session tomorrow, towards the end tomorrow. क्या लगता है आपको pitch और spin होती जाएगी और टूटेगी? Your thoughts on that? नहीं, जो इंग्लैंड न्यूजीलैंड को एडवांटेज मिला था वो था ओवरकास्ट कंडीशंस का. दैट्स व्हाई द पीसर्स मैनेज टू गेट दोज wickets, managed to get them all out for 46. Or also the wicket was fresh, that had moisture, and it was quite hard and dry wicket also ki jiski wajah se there was some bounce initially in the initial stage where the wicket keeper was just jumping around to catch those balls in his gloves. बट या जैसे जैसे विकेट ओल्ड होती जा रही है, डिटेरियोरेट होती जा रही है, विच इज हाउ इट हैपेंस इन इंडिया. ब्रेक हो गई है विकेट और ब्रेक होगी और वो कंडीशन थोड़ा डिफिकल्ट होगी. स्पिनर्स, दैट्स व्हाई क्या हम गलत थे ये इसको लेकर कि यार कुलदीप को खिला लिया या आकाशदीप को नहीं खिलाया. अभी भी मैं मानता हूँ आकाशदीप को खिलाना चाहिए था. शायद मोहम्मद सिराज को बिठा देते कि एटलीस्ट एक स्पिनर अगर एक्स्ट्रा खिलाना था तो. मगर आपका काम अश्विन और जडेजा से ही हो जाता, मगर कुलदीप भी कंट्रीब्यूट करेंगे तो आई थिंक इंडिया हैज गॉट द वैरायटी. एंड अगर if they come out with a good target, like again I'll say 150 175 is enough on a wicket. That is like after tea session and fifth day it's going to get worse difficult and will start playing on the minds of the New Zealand, the Kiwi batters. क्योंकि यार at the end of the day India are masters at home, right? 46 was just one of thing. 46 all out was just one of thing. That doesn't happen every day. Or and we have seen over the last few games how India has pulled off amazing victories against England first without having their main players like Virat and the KLs and the Shreyas Ayers with youngsters. And then you saw what happened in the last test match against Bangladesh, which just finished in 2 days. So New Zealand will have some fear. They will vary. You can't take India lightly, even if they get a 150 or 130 kind of a target to chase. क्योंकि fourth fifth day you know what happens on Indian wickets and we have top class spinners यार. अगर अश्विन को मिल गया वैसा विकेट जहां पर विकेट ब्रेक हो रहा है, जहां पर पैचेस है, या कुलदीप को मिल गया, and Jadeja can do wonders with his arm balls and the sharp turners. So it's going to be one difficult task. The Yeah. onus lies on the batters right now. यार आपने पहले गंवा दिया 46 ऑल आउट करके. अपने अब आपको कंपेंसेट करना चाहिए था और अब बारी आपको कंपेंसेट करनी, क्योंकि आपके बॉलर्स ने हर मैच जिताया है थ्रू आउट, चाहे वो इंग्लैंड सीरीज हो या बांग्लादेश. ऑब्वियसली टेस्ट मैचेस में बॉलर्स ही जिताते हैं, बट बल्लेबाजों का भी रोल रहता है और बल्लेबाज ने मोस्टली कुछ खास ग्रेट काम नहीं किया है. रोहित फॉर्म में नहीं रहे, लकीली ये मैच में 50 मार दिया, या विराट कम बैक किए हैं, केएल राहुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं खेले हैं, ऋषभ पंत ने कम बैक तो की थी, पिछले मैच में वापसी की थी. So onus lies on the batters tomorrow. Take up the responsibility, get some good runs, start from scratch again without thinking that. In fact, I would say Sarfaraz Khan should not think that he's on 70 and he's got just 30 runs to score to get his personal milestone of first ever 100 in international career or maybe Test cricket. I think he should think about the team, fight it out, get those runs, get start from zero, look Yeah. for another double hundred. He's got that confidence of scoring a double hundred, right? From Yeah. Irani Trophy. So if getting a double hundred or a 175 here Hmm. will be a major boost for him going into Australia series. Now that he is fixed, Hmm. now that he's got the runs in this crucial test match, I think his Hmm. value in the team has gone higher and higher. And this is the best time to get in the good books of all the critics right now. Skeptics who are thinking that he knows only how to play those kind of street kind of cricket. Surprise is kind of a cricketer. You won't see classical shots from him. You will see how we play those gully cricket shots, those cuts, those Yeah. jabs, those खड़ूस पैर के बीच में खड़ूस से काइंड ऑफ निकालना. क्रिकेटर. पैर से नहीं, खड़ूस भी होते हैं जो मुंबई क्रिकेटर्स होते हैं, वो क्लासिकल बैट्समैन भी होते हैं. आप तेंदुलकर की बात करें, आप अमोल मुजुमदार की बात करें, खड़ूस, हाँ खड़ूस यार आप विकेट आसानी से नहीं दे. नहीं दैट टर्म देंगे. कैन बी यूज्ड
He is not giving Yeah. away that wicket, and he should continue doing it. मुंबई क्रिकेट Hmm. आना चाहिए, वो mindset आना चाहिए. Maybe he's not that classical batsman, but definitely he can put out those gully mindset and play Khadus cricket and give India that win, the desperate Yeah. win that India is looking. No, absolutely. Bansal, how do you see the next 2 days, or rather, let's talk about day four as of now. How do you see the day four panning out for the Indian team? Do you think they have in them to reach New Zealand's score, that is 125 runs, and then on top of that, hit or score more, 150, 170 more, a match-winning score? What's your thought on that? आई फील एज आई टोल्ड अर्लियर, मतलब क्योंकि हम इंडिया में ही खेल रहे हैं, बेंगलोर केएल राहुल का होम ग्राउंड है, ऋषभ पंत प्लेज वेल, सरफराज इज ऑलरेडी गोइंग वेल, तो मतलब आई फील कि आइडियली वी शुड बी एबल टू रीच व्हाट न्यूजीलैंड हैज ऑन द बोर्ड राइट नाउ, और उसके ऊपर भी हम एटलीस्ट 100-150 रन बना सकते हैं अगर थोड़ा अच्छे से एग्जीक्यूट करें खुद को, बिकॉज द बैटिंग लाइनअप इज टैलेंटेड. अश्विन जडेजा भी आएंगे, अगर वो भी लास्ट में 40-50 रन मारते हैं जैसे टीम साउदी ने किया आज, तो I think it's not too difficult a task to have a lead of 150-200 runs, but what I feel is अगर हमें जीतना है तो I think at least 200 runs चाहिए हमें. ताउस भाई 150-170 बोल रहे हैं, but I feel कि अगर 150-160 का टारगेट रहेगा तो वो थोड़ा थोड़ा बैलेंस्ड रहेगा कि न्यूजीलैंड कैन चेज इट आउट, बट अगर 200 के ऊपर चला गया अपना लीड तो आई फील कि एक मेंटल प्रेशर बनेगा उन पे 200 का नंबर देख के बैटर्स पे, और वो थोड़ा ज्यादा डिस्टेंट लगेगा रादर देन चेजिंग 150-160 रन, और बॉलर्स को भी ऑब्वियसली 50 रन का ज्यादा कुशन मिलेगा. सो आई थिंक इवन इफ द टारगेट इज लाइक 205-210, तो दैट विल बी अ वेरी वेरी गुड टारगेट, और कंसिडरिंग कि पिच भी जिस तरह क्रम्बल हो रही है और फिफ्थ डे पे और भी बॉलिंग फ्रेंडली होगा, स्पिन फ्रेंडली होगा पिच, तो वो अगर वो चीज़ें होती है, आई इट सीम्स लाइक वी आर बीइंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक राइट नाउ कि न्यूजीलैंड के स्कोर तक पहुंच जाएंगे, उसके ऊपर भी 200 रन का लीड ले लेंगे, एंड देन द स्पिनर्स विल हैव देयर मैजिक प्ले अगेंस्ट न्यूजीलैंड. तो थोड़ा ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है अभी, बट इफ समथिंग लाइक दिस कैन हैपन it will be brilliant. Like, Yeah, I mean, that means giving a 200 run target means you have to score 320, 325 more from exactly. here, which is a big ask. But Taus, uh, will you send KL Rahul first, or will you send Rishabh Pant first at the start of day four? Yeah, I want to know what is the status of Rishabh Pant. I mean, he was struggling with He injury, was and he was looking ready to go. He was all padded up, just sitting with his bat. So he was looking, considering that he is fit to bat. Will you send a batter like Rishabh Pant, who will take his chances, who doesn't care, yeah, who will play why to not? his Yeah, aggressive, why or will not? you I mean, send KL because Rahul? why not? Because he's see, he's the one. See, the kind of cricket that we are playing right now, the kind of attacking shots that Virat Kohli and Sarfaraz Khan was playing. This is the right time to send Rishabh Pant so that they can put the pressure on New Zealand batsmen and we can get as many runs quickly as possible. तो अगर आपको वो रन्स फटाफट करना है, क्योंकि अगर आप जरा सा भी और ऑल्सो केएल राहुल इज इन डिफरेंट काइंड ऑफ मूड राइट नाउ. Yeah, he looks nervous, he is in a different zone, he is thinking too much. So why to create any kind of doubt? Let's have clarity in thought. Let's send Rishabh Pant. Just go out there, play his shots, enjoy the game, take up that challenge, and he's the only one who can take on the effect. Yeah. yeah, And yeah, you have Ijaz Patel to take on the way. I like the way Sarfaraz Khan counter attacked Ijaz Patel yeah, on back-to-back sixes. That was something admirable, something worth. yeah, I enjoyed watching that perfect shot. So why not Rishabh Pant? So these two guys, and mind you, both have played under 19 cricket together. So it will be yeah, interesting. India under 19. So it will be interesting to see them take on these Kiwis and yeah, thrash them around and at least take. चलो बंसल भाई की बात मान जाते, दो 200 250 तक पहुंचा दे, क्योंकि 150 is something, a very small target, but a fighting total and low scores are very very difficult to chase on these kind of wickets. माइंड पे घूमता रहता है. that But that yeah, that yeah, definitely. the So total also depends let's on. go with Rishabh. Yeah, 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 let's yeah, go with Rishabh instead of KL Rahul. yeah. The total also depends on the amount of time you give
it to them. If you give them two sessions, Exactly. 150 is nothing. Because 150 in one session is also in today's cricket कुछ भी नहीं है वो. But two sessions so it will be a cake, might be a cake pop for them. So अगर आप दो session दे रहे हो तो आपको target भी 250 देना पड़ेगा just to, and that looks really tough right now. But we have few comments here. We'll take those comments and see what the fans have, what the viewers have to say about this amazing match that is going on at the Chinnaswamy Stadium in Bengaluru. Ravi Shankar is here. Hi, Ravi Shankar. Wicket of Virat Kohli was around the corner because before Virat Kohli wicket over, New Zealand bowlers conceded only 1 runs in last 3 overs, and in those 3 overs there were 2 maiden overs. So basically he has to say that वो प्रेशर बनाए रखा न्यूजीलैंड ने विराट कोहली की विकेट से पहले बिल्डअप किया उस विकेट के लिए और वो जस्ट अराउंड द कॉर्नर थी क्योंकि रन ज्यादा नहीं आ रहे थे विच इज अ वेरी फेयर टेक फ्रॉम रविशंकर. डू वी हैव बट एनी? आई थिंक कि मतलब प्रेशर न्यूजीलैंड बॉलर्स ने ज्यादा बनाया नहीं था क्योंकि बिकॉज द डे वाज अबाउट टू एंड. आई थिंक वो लोग खुद ही ये डिसीजन लिया था कि अब ज्यादा रिस्क नहीं लेते, अब ज्यादा शॉट्स नहीं खेलते, लेट अस जस्ट ट्राई टू एंड द डे वेल, विकेट बचा के रखते दोनों का, कल आके फिर से मारेंगे. तो आई थिंक न्यूजीलैंड ऑब्वियसली वाज बॉलिंग वेल. वो जो विकेट वाला बॉल था वो भी काफी अच्छा था एंड जस्ट गॉट अ फेदर ऑफ कोहलीज बैट. Unfortunate for dismissal, but I think it was not because of the pressure that New Zealand bowlers created. Like क्योंकि जो कनव आप भी बोल रहे थे बैक स्टेज की, कोहली ने शायद सरफराज को भी बोला कि अब ज्यादा शॉट्स मत मारना, डे को अच्छे तरह से एंड करते हैं. तो आई थिंक दैट वाज ऑन देयर माइंड कि ज्यादा शॉट्स नहीं खेलते हैं. तो And I don't think yet, ज्यादा pressure. Kohli took that risky double. But yeah, it happens. It happens in cricket. Next comment, please. पीयूष राजेश है. बॉलर्स ने भी दिवाली बोनस दिया है बैट्समैन की तरह. 8th विकेट पार्टनरशिप ऑफ 134 रन टेल द लेवल ऑफ इंडियन बॉलर्स. बिल्कुल वो सऊदी की इनिंग्स, वो पार्टनरशिप, इट इज रियली कॉस्टिंग इंडिया क्योंकि आप 134 का भी आप गैप देखिए ना. आप अभी 134 अगर आप वो नहीं देते तो आज आप level, almost level hote. But then again, this is cricket and can't help it. So these were the comments we have today. India versus New Zealand, day 3 has ended and New Zealand still in the driving seat, steering wheel in their hand, very comfortably positioned. But you never know. 7 wickets है. सरफराज 70 पे खेल रहे हैं. ऋषभ पंत है, केएल राहुल है, रविंद्र जडेजा है, रविचंद्रन अश्विन है, मोहम्मद सिराज है द बैटर. इतनी बात होती है उनकी, वो भी है. तो यू नेवर नो. जैसे कि ताऊस और बंसल ने कहा 150 202 मैच को मजेदार करो, बट दैट इज वेरी फार हेड. अभी कल का 1 घंटा बताएगा कि इंडिया क्या ये मैच हल्का सा भी अपनी तरफ खींच पाएगा या नहीं. But we'll be here. CricketNext will be here. You guys will also be here. So do join us tomorrow. And to get more such updates and lives, do subscribe to the CricketNext YouTube channel. Thank you, Bansal. Thank you, Taus. Thank you so much to all our viewers. Please take care of yourself and have a very good night.